अरे कुछ तो बोलो भाई। जेएनवी रामनगर। आई थिंक शिवा विल बी देयर। जेएनवी रामनगर से है ना। शिवा, यू रिमेम्बर मी? जेएनवी एनएम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून. So your full class is attending the this session na, or is it individually you are attending? What happened JNV एनएम स्टूडेंट्स? आप नाराज हो क्या मुझसे? आई एम वेरी फाइन. ओके. I have visited to Mysore uh, previous to previous month, and when I'm moving back to the Mysore to Bangalore na, I have seen a railway station named Ramnagaram. So is this Ramnagar and Ramnagaram are same na? I was sitting inside my train coach, and if I traveling with my own vehicle na, I'll definitely come to your school. Okay, very good. So I think we are good to go. So I welcome to you all once again. Let me just start recording this. Okay. So hello dear students. I welcome you all in this session of electrostatics. Okay. This is our lecture number 12. In the previous session we have explored the beauty of Gauss law in electrostats. Okay. And have seen the various cases like line charge and a cube when the charge is placed on a cube at different location, and we have go through it, and we have derived the electric flux value. Okay. Now, and one of the application we have did finding out the electric field due to line charge. So these things we have covered in the previous session. Now in today's session, what we are going to do, we will find out the electric field due to the infinite plane sheet. Okay. Infinitely uniformly charged plate, non-conducting plate, and spheres. So Gauss law. So you do not need to dive into that lengthy expressions or lengthy derivations. So Gauss law will make the things very clear and very easy for you. Okay. So try to pay attention to the class, and please make sure that you are making the notes of the classes. Okay. That will be definitely going to help you for your future. Okay. So now this one. The electric field due to infinitely uniform charged infinite plane sheet. So this is the sheet, or you can say the surface. So whatever the charge is distributed over this surface will be spread by this surface charge density. है ना? We have seen three types of densities. Line charge density, when charge is placed on lines or distributed in line. When charge is distributed over the surface, then surface charge density will be introduced. And surface charge density is nothing but charge per unit area. क्लियर है? बहुत इजी इजी चलेंगे आराम आराम से. So this plane sheet, you can assume कि there are lots of infinitely long infinite line charge that are placed next to others. ठीक है. और इनके बीच में जो गैप है ना, वो बहुत कम है. एक के बाद एक ऐसे 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 प्लेस किए हुए. So this would form what? The surface. So a surface charge, a collection of surface charge, or this infinitely uniform charge plane sheet is nothing but what?
इट इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज. ठीक है, so we can consider it the infinite plane sheet is made of infinite straight long wires. Just give me a second. I We are live on the YouTube also. So I have to take care of that particular thing. Okay, just a second. Okay, ठीक है. So what is the infinite plane sheet? Infinite plane sheet is nothing but the collection of infinite straight long wires. ठीक है, they are placed next to next to next to next, and we have got with this surface charge density. ठीक है. Okay, now what the other thing? So we know that electric field due to infinite straight long wires is radially at every point. Radial होती है at every point. So electric field due to the infinite plane sheet will also be radial. किसी भी line charge से what is the field? Field is going like this. We have seen in the previous lecture. And when we group them together, when we group them, number of line sheet, so the field will be like this. Because these fields will be cancelled out by each other. Okay? In the next slide, this will be clear to you all. So this is a type of arrangement of electric field lines due to infinite uniformly charged infinite plane sheet. Okay, so this will be like this, coming out in both the direction. Got it? It is simply, if you see it from here, if you see it from here, यहाँ से अगर आप देखोगे, so you will find that this sheet will be look like this. Clear है? So these field lines will be like this. Okay. Ab, why we have to choose a Gaussian surface? Because Gauss law suggests that, Gauss law का statement is that line close integral of E dot ds is equals to Q enclosed divided by epsilon naught. So in that particular, this ds, because of this ds, we have to consider a surface, and that is why that particular surface is Gaussian surface. ठीक है, इसीलिए we have to consider the Gaussian surface, because in this expression it is the dot product of electric field with the area vector. ठीक है, so area किससे आएगा? किसी surface का ही area होगा. So उस surface को क्या बोलते हैं? That surface is the Gaussian surface. ठीक है, so अब आप मुझे एक बात बताओ, fields are coming like this. ठीक है, so what could be the possible what could be the possible Gaussian surface? Gaussian surface के लिए कंडीशन क्या होती है? Either the electric field is perpendicular to the surface area or the electric field is parallel to the surface area. अब देखो, सरफेस एरिया को आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन मान के चलना. ठीक है ना, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस. तो यू हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर सरफेस विच इज क्रॉसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली. बिकॉज अगर ये मेरी सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा. ठीक है, सो ऑलवेज चूज द सरफेस विच इज क्रॉसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस परपेंडिकुलरली. अब देखो, एक सरफेस एरिया आप ये भी ले सकते हैं, दिस प्लेन शीट इटसेल्फ. ठीक है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस.
So what we will consider, I will show you in the next page. This expression we have to find out. देखो, ये मेरे पास क्या है, शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। अब इससे जो फील्ड लाइंस है वो इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं। अगर मैं एक सरफेस लेता हूं, दिस, इफ आई कंसिडर अ सिलेंड्रिकल सरफेस, दिस वन, लाइक दिस, किसी को कोई आपत्ति? बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस की तीन सरफेसेस है मेरे पास। कौन कौन सी? सरफेस वन, surface 2, and this surface, this curved surface is 3. Now electric field is passing through like this. So when I talk about this surface 1, so यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर फॉर सरफेस 1 and 2. You can easily see, sorry, parallel, बिकॉज एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है ना? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे देखते हैं? जो भी सरफेस है उस पे अपना, उसके अकॉर्डिंग अपनी फिंगर कर्ल कर लो। द डायरेक्शन ऑफ योर एरो इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है? और वेरी सिंपल, ड्रॉ द नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज द वेरी इजी स्टेप। ठीक है? क्या करना है? ड्रॉ द नॉर्मल टू द सरफेस। नाउ, अब दिस कर्ड सरफेस, ये जो कर्ड सरफेस बची हुई है, ठीक है, इससे फील्ड किस तरह की होगी? इस पे फील्ड, फील्ड तो ऐसे ही जा रही है, फील्ड तो ऐसे ही जा रही है, दिस। बट दिस कर्ड सरफेस का अगर मैं छोटा सा क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूं, दिस वन, इससे जो एरिया वेक्टर निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। किसी भी पॉइंट पे मैं इससे छोटा भी एरिया कंसिडर करूंगा तो उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? आउटसाइड, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है ना? दिस इज द सिलेंडर। ये जो सरफेस है ये, इससे परपेंडिकुलर क्या होगा? ऐसे ही तो होगा, आउटवर्ड, ऐसे। ठीक है? सो एट सरफेस 3, at surface 3, electric field and area vector are what? Perpendicular. ठीक है ना? So now let apply the Gauss law here. Apply the Gauss law. ठीक है? Suppose the charge that is given to it is small q. ठीक है? अब देखो, and radius of this cylinder that we have considered is small r. ठीक है? And length of the cylinder is nothing but 2l. ठीक है? क्लियर है? नाउ अप्लाइंग, आप लोग खुद भी कर सकते हो इसे, अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ सजेस्टेड दैट, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ? लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? नाउ इस सिलेंडर ने, दिस अज्यूम्ड सिलेंडर और दिस गॉसियन सिलेंडर, हाउ मच चार्ज इट हैज इंक्लूडेड? देखो, दिस इज द प्लेन शीट विच इज टोटली चार्ज। ठीक है? एंड मेरा सिलेंडर इज लाइक दिस, वो यहां से क्रॉस कर रहा है, विच मीन्स इतना ही चार्ज, इतना ही चार्ज वो इनक्लोज कर रहा होगा। दिस मच वैल्यू ऑफ चार्ज इट इज इनक्लोजिंग, है ना? एंड दैट विल बी गिवन बाय व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ आई मल्टीप्लाई द एरिया इन सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density is sigma. So if I multiply the area of the cylinder, ठीक है, एरिया ऑफ द सिलेंडर, और कौन सा एरिया? दिस बेस एरिया, यही तो क्रॉस कर रहा होगा यहाँ पे, है ना? थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत है, देखो, यही तो क्रॉस कर रहा होगा ऐसे, है ना?
तो चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू व्हाट इज द एरिया, दिस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज देखो ये शीट है ना, इस शीट पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सिलेंडर को ना आप ऐसे मानो धारदार सिलेंडर है, ठीक है, वेरी शार्प सिलेंडर, और ऐसे हमने घुसा दिया इसे अंदर इस शीट के। ठीक है, तो अगर इस शीट के अंदर मैं घुसाऊंगा तो यही एरिया मल्टीप्लाई द बेस एरिया इटसेल्फ। ठीक है, so that is why the charge enclosed here is sigma into pi r square. Now how many surfaces, जितनी सरफेस होंगी उतनी बार लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो how many surface we have two base surface 1 2 and this curved surface 3. Now line integral of surface 1 plus line integral of surface 2 plus line integral of surface 3 equals to sigma into पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई डाउट है, एनीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट? राइट इट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, और इफ इट इज क्लियर टू यू देन आल्सो राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? जेएनवी, यनम, रामनगर, अहमद, अहमदनगर, खेड़ा, शिमोगा, बताइए, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? अब देखिए, इस सरफेस वन की मैं बात करूं, अगर सरफेस वन, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, ऐसे पास आउट कर रही है। ठीक है, एंड इसी से जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी तरफ ही। ठीक है, डीएस, डीएस कंसिडर कर लेते हैं चलो, एरिया वेक्टर भी किस तरफ है, इसी तरफ है। ठीक है, विच मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। कितना एंगल हुआ, 0। तो दिस विल बिकम ई डॉट डी एस कॉस 0, एंड सेम विद दिस सरफेस 2। ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट सरफेस 3, सरफेस 3 का हमने देखा था, दिस इज द कर्व्ड सरफेस, लेट्स से एरिया वेक्टर इज कमिंग अपवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सो एंगल विल बिकम 90 डिग्री बिटवीन देम। तो सरफेस 3 will be, this will be 0 because E dot ds will be EDS cos theta, EDS cos 90, and cos 90 will be 0, and this will become, because electric field दोनों तरफ क्या है, यूनिफॉर्म है, तो सेम रहेगी, एरिया वेक्टर भी दोनों का सेम है, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ ई वेक्टर डॉट ds, और डॉट अब आप हटा सकते हो, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ ई ds cos 0 equals to sigma pi r square upon epsilon naught. Now E को you can take common because this is uniformly charged. So uniform charge से क्या होगा, uniform electric field बनेगी, and the uniform electric field itself is a constant thing. So you can take out of the integration. Now close integral of ds is equals to sigma pi r square divided by epsilon naught. Now what is this integration of ds? This is the total sum, टोटल एरिया। ये बेस एरिया था, इसमें से एक छोटा टुकड़ा लिया आपने, ये डीएस है। अब ऐसे इनफाइनाइट डीएस से मिलकर के ये सरफेस बनी है, एंड दिस इंटीग्रेशन इज शोइंग दैट यू आर समिंग ऑल ऑफ these एरियाज, which means you are, this line integral of ds is meaning that you are considering the complete area, total area. So you can say that 2e and area is what, कौन सी सरफेस का एरिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड, कोई सी किसी एक का भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज बोथ द सरफेस एरिया आर सेम, एंड दिस विल बी रिटन बाय पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया into sigma pi r square divided by epsilon naught. This pi r square pi square will cancel out, so electric field will be coming out as sigma upon 2 epsilon naught. So this is really important.
If surface charge density is negative, so this field, electric field will be negative, like this. ठीक है, इस तरफ ऐसे आएगी. ठीक है, नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हो. If surface charge density is positive, which means charge distribution is positive, then this electric field will also positive. So this is the final expression of it. ठीक है, क्लियर है? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. किसी को कोई डाउट है? इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क एनी टाइम. ओके, नाउ ड्यू टू द इनफाइनाइट, अब इसी पे ही बात कर लेते हैं. चलो, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शीट एंड plate? So plate has thickness also. Plate has thickness also. But here the point you should remember that this is uniformly charged conducting plate. So whatever charge you will give it to it, the whole charge will be came out on the surface. Will be came out on the surface. ठीक है, सारा का सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा. सो इट विल बी द सेम केस एज ऑफ प्लेन शीट. ठीक है, सेम केस एज ऑफ प्लेन शीट, विच मीन्स यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, अगेन यू आर गोइंग टू कंसिडर अ सिलेंडर. applying the same equation, you will find the same equation here. Now if I talk about what is the field at this point, let's say this point is P. So we know that due to this sheet, infinite long sheet, the field will be away, and which is given by sigma upon 2 epsilon naught. Now this sheet number 2, there is a combination of two sheet na, this sheet, then there is a thickness in between them, then another sheet has come. Okay, so due to that sheet also the field will be away because this is a positive charge, and given by same, E2 is equals to sigma upon 2 epsilon naught. So total field at point P will be E1 plus E2 given by sigma upon epsilon naught. So always remember this. सेम अगर इस पॉइंट पे बात करूं Q पॉइंट पे, तो यहां भी इसी तरफ होंगी दोनों फील्ड, E1 एंड E2. ठीक है, got it? And this concept will help you when we will do the second part of this chapter, electric potential and capacitance. ठीक है, so this will be help you in a very numerous way. ठीक है, so remember this expression. Due to a plane sheet, the electric field is sigma upon 2 epsilon naught. But due to the conducting plate, at a particular point, the field will be what? Sigma upon epsilon naught on both the ends. Okay? Okay, once again. Yeah, why not? Why not? Once again. Just give me a moment. Huh? Okay. तो शीट से मतलब क्या था? विच हैज जीरो थिकनेस. शीट में मैंने थिकनेस कंसिडर नहीं की थी. ठीक है ना, जब मैं शीट का केस डिस्कस कर रहा था, देयर इज नो थिकनेस इन दैट केस. तो उससे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, क्या आई थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब जब मैं प्लेट का केस कंसिडर कर रहा हूं, दैट प्लेट इज कंडक्टिंग प्लेट. तो कंडक्टिंग होने की वजह से क्या हुआ? जो भी चार्ज मैं इसे दूंगा ना, वट एवर चार्ज आई विल गिव टू इट, दैट कंप्लीट चार्ज विल बी ट्रेवल ऑन द सरफेस. ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है ना, उसे आप चार्ज दोगे तो वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ड्यू टू कंडक्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, तो सारा का सारा चार्ज कहां पे आ गया? सरफेस पर. ठीक है, सरफेस पे जब सारा चार्ज आ गया, अब देखो, अगर आप इसे यहां से देखो, इस तरह से, इस तरफ से देखो, तो दिस विल बी लुक लाइक दिस, है ना, ऐसे दिखेगी. बट इट हैज सम थिकनेस नाउ. इस थिकनेस की वजह से इसे प्लेट बोल रहे हैं. एंड
अगर आप देखो सिंपली तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट है। एक शीट से कितना, एक शीट से कितनी फील्ड थी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो दो शीट से कितनी फील्ड होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। क्योंकि इस फील्ड, इस शीट से जो इस पॉइंट में फील्ड होगी वो अवे होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, रेडियली अवे। इस शीट पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे भी इस पॉइंट पे क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो दोनों फील्ड क्या हो गई, सेम डायरेक्शन में होगी। तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सो टोटल फील्ड विल बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब क्लियर है जेएनवी रायचूर, इज दिस क्लियर टू यू नाउ? ओके, वेरी गुड। नाउ if I consider a case, suppose this is the sheet, सॉरी प्लेट, थोड़ा ज्यादा थिकनेस दिखा रहा हूं मैं इसकी, एंड दिस इज कंडक्टिंग प्लेट, अगेन कंडक्टिंग प्लेट। तो इस कंडक्टिंग प्लेट से क्या होगा, देखो, इफ आई कंसिडर अ पॉइंट इनसाइड द प्लेट, देन व्हाट विल हैपन। अब सारा चार्ज तो कहाँ है, सरफेस पे है, ठीक है। एंड इफ यू कंसिडर सम ऑफ द गॉसियन सरफेस विच इज covering this point and try to find out the field. So Gauss law says that line integral of E vector dot ds is equals to q enclosed divided by epsilon naught. अब इस सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, बताओ, एनीवन, जेएनवी यानम, जेएनवी रामनगर, टेल मी हाउ मच चार्ज दिस सिलेंडर हैज इंश्योर इनक्लोज्ड, बताइए, जेएनवी रायचूर, आंसर, टेल मी हाउ मच चार्ज दिस सिलेंडर हैज कंटेन इटसेल्फ। कितना चार्ज है, देखो सारा चार्ज तो कहाँ पे है, सरफेस पे है। तो इस सरफेस ने, सारा चार्ज तो सरफेस पे है, सारा चार्ज सरफेस पे है। तो इनसाइड में कितना चार्ज हुआ, जीरो चार्ज, क्योंकि अभी बताया था कंडक्टर में कोई भी चार्ज अंदर रह ही नहीं सकता, टोटल चार्ज विल ट्रेवल टू द सरफेस, एंड आई एम टॉकिंग इनसाइड द सरफेस। सो नो, इट्स नॉट इट्स वॉल्यूम, यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं। सो इफ क्यू इनक्लोज इज जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, अब देखो इस पॉइंट पे इस चार्ज से कितनी फील्ड होगी, इस शीट से, दिस वन इस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगी, और इस वाली शीट से इस तरफ जाएगी, ठीक है। कितना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फील्ड कितनी हुई इस पॉइंट पी पे, ई पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, outside the conducting plate the field will be sigma upon epsilon naught. Due to sheet the field will be sigma upon 2 epsilon naught. Due to plate the field will be, conducting plate की वजह से field will be sigma upon epsilon naught, and inside the conducting plate the electric field will be zero always, ठीक है। Now this case, if this is a non-uniformly charged, sorry, uniformly charged non-conducting plate, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। नाउ इन दिस केस जो भी चार्ज मैं दूंगा ना, दैट चार्ज विल बी नॉट ट्रेवल टू द सरफेस, वो सारा चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, इसकी वॉल्यूम में, कहाँ, वॉल्यूम में, इनसाइड ऑफ द प्लेट, इनसाइड ऑफ द प्लेट, ठीक है। प्लस 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 चार्ज ही कंसिडर करते हैं जनरली, तो आई एम कंसिडरिंग द प्लस चार्ज। सो बस नॉन कंडक्टिंग प्लेट में क्या डिफरेंस आया, सारा चार्ज कहाँ पे चला गया, इनसाइड द सरफेस, ठीक है। नाउ
If I talk about the field outside at this particular point or this particular point, so I will covering this point like this because field will be, I'm not going to tell you again and again. देखो, field will be like this, ऐसे होगी, रेडियली अवे होगी. So surface would be a Gaussian cylinder. ठीक है, this is surface 1, surface 2, and this is surface 3. Now let's say the thickness of this plate is 2d and length of the cylinder that we have considered is 2l. ठीक है, क्लियर है. नाउ अगेन अप्लाई द गोस लॉ हियर. गोस लॉ जैसे ही आप अप्लाई करोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड. अगेन यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड निकालना आना चाहिए. अब देखो, क्या ये चार्ज, वट एवर द चार्ज वी हैव गिवन टू दिस नॉन कंडक्टिंग प्लेट, क्या ये चार्ज सरफेस पे है? एनीवन टेल मी, इज दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड द सरफेस और वॉल्यूम? जेएनवी रामनगर स्टूडेंट, टेल मी. जेएनवी अहमदनगर, जेएनवी शिमोगा, यनम, रायचूर, टेल मी, the charge given to the non-conducting plate is distributed the surface or the volume? बताइए. This is looking like a cuboid ना, and it is non-conducting. So whatever the charge I will give to it, this will distribute it to the volume of it, which means to calculate the charge enclosed here, Q enclosed, we have to consider the volume charge density. Volume charge density. ठीक है, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो. तो बताओ कितना चार्ज इनक्लोज होगा? ओनली दिस मच वॉल्यूम इज कंसिडर्ड, दिस मच. लेट मी चेंज द कलर हियर. दिस पोर्शन इज कवर this particular volume and it will be look like this, a very small cylinder of, जिसकी लेंथ कितनी होगी? 2d. एरिया ये तो a है ही, क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे इतना ही तो पोर्शन कट करेगा ना ये. अगर आपको एक होल ड्रिल करना है to the back end of it, so the material that you will taken out will be look like this, है ना, and that is the volume of charge that is contained by this Gaussian cylinder. ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज कितना होगा? Q enclosed is रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम. अभी सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? एरिया इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर. एरिया इज a and length is 2d. So this is the Q enclosed. Now तीन सरफेसेस भी है, थ्री सरफेसेस है. सरफेस 1, सरफेस 2, दिस कर्ड सरफेस, एंड सरफेस 3. ठीक है, नाउ this surface 1 has area vector in the direction of electric field vector. This surface 3 is also have area vector in the direction of electric field vector. So again, and this curved surface has an area vector perpendicular to the electric field, which means that particular EDS will be going to 0. So it will be look like E vector dot ds vector plus E vector dot ds vector plus phi 3 E vector dot ds vector equals to Q enclosed divided by epsilon naught. Now this surface 3 is the curved surface. Curved surface से कितना हो जाएगा? 0, because angle between E and ds is 90 degree and cos 90 will be 0. In the next line, we will write that this phi 1 E vector dot ds vector plus phi 2 E vector dot ds vector equals to rho 2d into area divided by, this is charge enclosed, divided by epsilon naught. Now this ds and ds are same.
ds and ds are same. This has area A, this has also area A. Electric field is also same, uniformly distributed. So this will be written as 2 times of EDS cos 0 equals to rho 2D into A divided by epsilon naught. Now E को you can take common out. This is integration of ds rho 2D into A divided by epsilon naught. Okay. Now this line integral of ds is nothing but the base area, and base area is A that we have considered. So it will be coming out to be 2EA rho 2D A divided by epsilon naught. A and A will cancel out. 2 and 2 will also cancel out. Electric field will come out as rho D upon epsilon naught. Now what is the difference? Difference is of charge density. In the case of conducting plate, this field is coming out sigma upon 2 epsilon, sigma upon epsilon naught. But in case of non-conducting plate, the field is coming out to be rho d upon epsilon, which means it depends on the thickness of the non-conducting plate also. Okay. Now, let me discuss the another case here, case number 2, and this is constant. देखो, rho is constant, d is constant, epsilon naught is constant, which means this electric field outside the conducting plate is constant. Now the second case is electric field inside non-conducting plate. अब देखो, I am considering it as a little bit thick and the thickness of the plate same 2D. Now here the charge is distributed plus plus plus. ठीक है. Now, so what we will do? We will draw a Gaussian surface. अब यहां से भी Gaussian surface क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा. इसकी जो लेंथ मैंने कंसिडर की है that is 2x, the length of the cylinder. Area is A. Again apply the Gauss law. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी कैसी होगी? इस तरफ होगी, ऐसे ऐसे होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, विच मीन्स कर्ड सरफेस से यहां भी जीरो हो जानी. तो ओनली एक्सप्रेशन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, 2 times of E vector dot ds, EDS cos 0 equals to charge enclosed. ये इंटरेस्टिंग है. चार्ज इनक्लोज कितना हुआ? जितना ये गॉसियन सिलेंडर के अंदर चार्ज है ना, जितना इसकी वॉल्यूम के अंदर चार्ज है. किसकी वॉल्यूम? दिस गॉसियन सिलेंडर वॉल्यूम. गॉसियन सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है? लेंथ इसकी कितनी है? 2x. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A. सो Q इनक्लोज कितना हो गया? रो चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज एरिया इनटू length, which is 2x. Now put it here, it will become 2e line integral, close line integral है ये, जहां भी छूट जाता है ना अपने आप लगा लिया करो. Close integral of ds is nothing but the base area, so it will become as a. Q encloses rho area into 2x divided by what? Divided by epsilon naught. This is the Gauss law, na? Area and area will cancel out. The electric field is coming out as 2 and 2 will also cancel out. So the electric field is coming out as rho x upon epsilon naught. And x is a variable thing. You can increase the length. You can increase the length of this cylinder. So if you draw the graph, between E and X, so when कहां तक वेरी कर सकता है X? सरफेस तक, है ना? 2D हो सकता है. So this will be a linear variation. E is directly proportional to X. So this will be a linear variation up to the surface. Up to surface it is a linear variation,
and after that it will become constant, this one. आउटसाइड पे कितना था, रो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड डी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट विच इज कांस्टेंट, ठीक है. तो दिस इज द वेरिएशन. रिमेंबर दिस प्लॉट आल्सो, दिस प्लॉट को आल्सो रिमेंबर नाउ. ठीक है, क्लियर है सभी को? एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस? वेरी सिंपल एक्सप्रेशन है ना, सिंपली, बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. बताओ, एनीवन एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस? यू कैन आस्क एनी टाइम. ठीक है. नाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल. थिन स्पेरिकल शेल को हम स्फेयर भी बोल सकते हैं, स्फेयर. ठीक है. अब इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहां लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं आएगी, बिकॉज दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम. ठीक है ना. तो वी विल कंसिडर द वॉल्यूम हियर. यू कैन ऑल्सो कंसिडर द सिग्मा, बट वी विल कंसिडर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. नाउ, अब देखो इससे फील्ड किस तरह से होगी. थिन स्पेरिकल शेल से, यानी कि दिस होलो कंडक्टिंग स्फीयर से, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल कंडक्टिंग, कंडक्टिंग. अब कंडक्टिंग है तो जो भी चार्ज हम इसे देंगे, वट एवर द चार्ज वी विल गिव इट टू इट, द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ इट. नाउ, कैसी फील्ड लाइंस होंगी देखो जरा. फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस. ऐसी तो होंगी ना, रेडियली आउटवर्ड इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज. So, what would be the best option to select as a Gaussian surface? Gaussian surface would also be a sphere, because if we consider the sphere, the field line will pass like this, and at every instant they are perpendicular to the surface. They are perpendicular to the surface, which means surface area and electric field are always in line. ठीक है, always in line, which means angle between E vector and area vector are पैरेलल. और यही तो हमें चाहिए, है ना. सो द फर्स्ट केस दैट वी विल कंसिडर इज द फील्ड आउटसाइड द शेल. तो आउटसाइड द शेल के लिए वी हैव कंसिडर अनदर शेल, देन अनदर शेल. सो यू कैन कंसिडर द गॉसियन सरफेस सेम एज द थिन स्पेरिकल शेल. तो इससे भी क्या होगा, फील्ड लाइंस पास आउट होंगी आउटसाइड. ठीक है. तो आउटसाइड के लिए वी हैव कंसिडर्ड दिस एज अ गॉसियन सरफेस. This Gaussian surface has a radius of small r, and this thin spherical shell has a radius of small r, capital R. ठीक है. यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसिडर करो. ठीक है ना. नाउ, अप्लाई द गॉस लॉ. अप्लाई गॉस's लॉ. Now Gauss law is what? Line integral of E vector dot ds vector. अब यहाँ अलग अलग सरफेस तो नहीं है, there is only one surface, this Gaussian surface. ठीक है. Is equals to q enclosed over epsilon naught. Now, suppose this thin spherical shell has given a charge small q. So, इस Gaussian surface ने कितना चार्ज इनक्लोज किया? This Gaussian surface has enclosed total charge. Total charge is enclosed. Total charge enclosed by the surface. ठीक है. So this q enclosed is nothing but q, whatever the charge is given to this surface. So you can write this as line integral of, और E और ds के बीच में कोई भी छोटा सा एरिया कंसिडर कर लो गॉसियन सरफेस पे, उससे एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, अवे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन. So angle between electric field and ds vector is 0. So this would be E ds cos of theta, and which is 0 degree. Q encloses small q upon epsilon. Now, this E is reuniform, so you can take it out. Integration of ds q upon epsilon. Now, what is the surface area of a sphere? This Gaussian surface is spherical. So, what is the surface area of spherical surface?
surface area of spherical surface is 4 pi r square. Why small r? Because the Gaussian surface की radius is smaller. ठीक है, q upon epsilon naught. And when you take what is the electric field coming out, very interesting result. It is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. So it is coming out same as point charge. Point charge का expression याद है? Point charge. अरे ये कौन बोल रहा है भाई? Who is speaking? Put yourself on mute. ठीक है, so this expression is same as point charge. And remember the time I have told you about the Coulomb's law. Coulomb's law is always applicable for point charge. And I have told you, whenever the charge is given to the spherical surface, you can consider it to the at a point charge. So that is why this field is coming out as a point charge. ठीक है, now what is the field inside of it? Inside में कितनी field होगी? Field inside the cell, which means वो जो मैंने गॉसियन सरफेस ली है, दिस इज R1, दिस इज R2. कोई भी सरफेस आप उठा लो, गॉसियन सरफेस कोई भी कंसिडर कर लो. व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस? चार्ज इनक्लोज, कितना चार्ज इनक्लोज किया? इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज 0. तो जब चार्ज ही 0 इनक्लोज किया है, व्हाट इज द फील्ड देन? E vector dot ds vector is equals to q enclosed upon epsilon naught. So this is 0. So electric field inside the charge, inside the cell is 0. ठीक है, always remember. For conducting, non-conducting, conducting and non-conducting hollow sphere के लिए सेम एक्सप्रेशन होगी, होलो स्फेयर. जब स्फेयर कैसा होगा? कंडक्टिंग हो और होलो हो, नॉन कंडक्टिंग हो और होलो हो. एंड सॉलिड कंडक्टिंग के लिए भी सेम ही एक्सप्रेशन यूज होगा. सॉलिड कंडक्टिंग ऑल्सो हैज द सेम एक्सप्रेशन. ठीक है, व्हाई? बिकॉज जो सॉलिड कंडक्टिंग होगा ना, उसने आपने उसे चार्ज दिया, तो ड्यू टू द कंडक्शन प्रॉपर्टी दैट चार्ज विल ट्रेवल टू द सरफेस, विच मीन्स इनसाइड में तो चार्ज फिर भी कितना है? 0. So these three cases considered as same, and the same expression you can use for them. ठीक है, now if you draw the graph for it, graph will be like this. This is E and this is R, distance from the radius, from the center of this spherical shell. So initially क्या है? सरफेस तक क्या है? 0 है. इनसाइड में तो 0 है, 0. देन सरफेस पे क्या हुआ? दिस वैल्यू, this value q upon capital R square. Put the R is equals to capital R, so this would be the electric field on the surface. तो सरफेस से चलेगा और फिर ऐसे डिक्रीज करेगा इस मैनर में, दिस मैनर. दिस इज E is directly proportional to 1 by R square. ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू विच इज E at surface, given by 1 upon 4 pi epsilon naught q upon कैपिटल R square. ठीक है, क्लियर है? Now move on to the last expression due to solid non-conducting sphere. अब देखो, solid non-conducting sphere से क्या होगा? जो भी चार्ज होगा सबका सब कहाँ होगा? इनसाइड में होगा.
whatever the charge we given to it, the total charge will be inside the volume of it. तो वॉल्यूम कंटेन कर रही है चार्ज को अब, ठीक है। आउटसाइड के लिए, फॉर आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, which means when small r is greater than capital R. Let's say capital R is the radius of this is non-conducting sphere, ठीक है, और small r is the radius of, small r is the radius of this Gaussian surface, this Gaussian surface, small r, ठीक है। सो ये भी सेम ही है, आउटसाइड में तो सेम हो गया। अब इसे आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फील्ड की वैल्यू तो मुझे यहाँ चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, विच इज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। सो वी कैन कंसिडर इट, consider this non-conducting sphere as point charge for calculating the field. Write it down, for calculating the field outside the surface. Outside the surface. So electric field will be given by 1 upon 4 pi epsilon naught. I'm not doing it again. Q upon R square. This value will be given. ठीक है, if the surface, इसे चार्ज कितना दिया है, Q, ठीक है। But in case of field is inside, when point over which we have to calculate the electric field is inside the surface, is inside the surface. So ये मेरा स्फीयर था, अब मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पे, तो इसे कवर करता हुआ आई विल कंसिडर अ गॉसियन स्फीयर। स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इसकी जो सेंटर से रेडियस है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की, स्मॉल आर है, और ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर। एंड सपोज द चार्ज डेंसिटी हियर इज रो, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो having not a problem with this, applying the Gauss law, E vector dot ds vector. अब E और ds में एंगल कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये स्फीयर है, इससे एरिया वेक्टर आउटसाइड जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, सो द फील्ड विल बी, and field and the angle between field and the area vector will be 0 degree, ठीक है। Q इनक्लोज, सारा खेल इसमें Q इनक्लोज का ही है बस। दिस E वेक्टर को बाहर ले लिया, दिस विल बिकम E ds cos 0 Q इनक्लोज। अब Q इनक्लोज देखते हैं कैसे निकलता है। ये मेरी छोटी सी क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस कौन सी है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सो जितना चार्ज इसके अंदर होगा वही तो इसने कंटेन किया, दैट इज द Q इनक्लोज। Q इनक्लोज को कैसे लिखेंगे, देखो, Q इनक्लोज इज नथिंग बट सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। उतना ही तो चार्ज चाहिए जितना गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो किसकी वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, स्फीयर की या गॉसियन सरफेस की, गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है तो वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। नाउ अब ये ds किसका है, ये ds किसका है, ds भी तो इसी का ही है,
सरफेस भी तो इसी पे ही कंसिडर की थी, गॉसियन सरफेस पे, डीएस। उसे सम आउट करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इज कमिंग आउट। सो वी कैन टेक द ई कॉमन, 9 integral of ds is equals to q encloses rho into 4 by 3 pi small r cube divided by epsilon naught. Now this will become e is equals e into 4 pi what? ds is what? 4 pi small r square, the area of Gaussian surface, rho into 4 by 3 pi small r cube divided by epsilon naught. Now 4 pi से 4 pi will cancel out, r square से r cube will 2 power will be cancel out. So electric field is coming out as rho small r upon 3 बच गया नहीं, 3 epsilon naught, which means inside में field is not zero in case of conducting sphere, non-conducting sphere. So if you draw the value of graph here, ग्राफ की अगर वैल्यू बताएंगे, दिस इज ई, दिस इज स्मॉल आर द डिस्टेंस ऑफ सेंटर। सो आप देख सकते हैं कि इनसाइड में दिस इज ई इनसाइड, ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, मींस देयर इज अ लीनियर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड inside the Gaussian surface or inside a non-conducting sphere. बस that is the case. एंड आफ्टर द सरफेस, सरफेस से कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी, लीनियर वेरिएशन। मैक्सिमम कहां पे होगी, सरफेस पे होगी। यस, ठीक है, गॉट इट। देखो सरफेस के लिए आउटसाइड द पॉइंट क्या निकाली थी ये, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एज कैपिटल आर, दिस विल बी एट ई एट सरफेस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इसे भी लिख सकते हो आप, इसे भी लिख सकते हो, ई इनसाइड इज व्हाट, रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, टोटल चार्ज अगर क्यू है पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसकी लेंगे, अब टोटल कंडक्टिंग स्फीयर की लेंगे क्योंकि टोटल चार्ज कंसीडर कर लिया। तो क्यू ओवर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, पुट द वैल्यू हियर, so it will become q into small r divided by 4/3 pi r cube मल्टीप्लाई बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर ओवर आर क्यू, दिस इज ई इनसाइड। यहां से भी क्या ही पता चल रहा है, ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ठीक है। अब यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, otherwise the lecture is being over. Thank you so much guys for being attentive in the class. Feels really nice to spend time with you. If anyone has any kind of doubt, you can ask right now. Otherwise, the lecture is being over. Thank you so much for being attentive in the class. Bye bye. Take care.